ओंकार जन्मों जन्मों से परमात्मा की तलाश जाने अनजाने हमारे भीतर है। कभी अनजाने में थी और कभी जानते हुए हुई। लेकिन कोई अगर पूछे कि परमात्मा का रूप क्या है, जब हम मंदिरों में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी किसी को परमात्मा कहते हैं, कभी गुरु ग्रंथ साहब को परमात्मा कहते हैं, कभी अपने इष्ट देव की मूर्ति होती है उनको ही परमात्मा समान मानते हैं। परमात्मा यानी क्या? कल अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और अगर आपको कोई रोक कर पूछे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम मुझे इतने जन्मों से बुला रहे हो, चलो आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूँगा, कोई भी इंसान उसे घर पर नहीं ले जा सकेगा। जिसकी इतनी तलाश है वो भी नहीं चाहिए। चाहिए तो अपनी कंडीशन से चाहिए। जो मेरी धारणा है बस उस धारणा के अनुकूल परमात्मा हो, अनुरूप परमात्मा हो तो बहुत अच्छे। अगर वो परमात्मा थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए तो वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो उसे परमात्मा उस धारणा में रखा हुआ है। तो हमने सच पूछो तो परमात्मा को भी एक बंधन बनाया हुआ है, एक बंद बना के रख दिया कि ये है तो परमात्मा, ये नहीं है तो परमात्मा नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो इसका निवारण होना चाहिए। परमात्मा यानी व्हाट? दूसरा, बचपन से ही सुनते आए हैं हमारे भीतर एक आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा का रूप है। अब चलो इस बात को भी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसको भी कंपेयर करते हैं। अगर मेरे भीतर आत्मा है और वही परमात्मा का रूप है तो मतलब आत्मा भी परमात्मा ही है। तो फिर आत्मा का रूप क्या है उसको भी तो जानना होगा। और जब अगर ये दो बातें सच हैं तो जब तक ये दोनों बातें एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी या सच पूछो तो पूरी नहीं उतरेंगी, तब तक परमात्मा को मानोगे कैसे? ढूंढने से तो परमात्मा इस तरह से तो हमारी धारणा के अनुकूल तो मिलेगा नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा उस परमात्मा की परिभाषा एक ओंकार सतनाम। ओशो ने जपजी साहब समझाते हुए 11वीं पौड़ी में कह दिया, समझाते हुए कि ये ओंकार सुनते सुनते आप परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। और गीता में कृष्ण ने समझाते हुए ये कह दिया कि मैं ही ओम हूं, मैं ही ओंकार हूं। What is the God? We are looking for the God for so many births. The quest is within us. But if you just going into any mall or a marketplace and someone comes and say that I am the God, and you are calling me from the births and births and lives, now just take me to your home, I will stay with you. No one can take anyone, any type of God like this. Because God, what we think is my contemplation, my imagination. I want a God to fit in that contemplation, that imagination which I have made. I means mind. Because up to now, I am considering mind is me. Consciousness, I am not talking about the consciousness. The mind has drawn a definition of the God, that this is God. And if it fits in that, okay. If it is not fitting in that, no God. That means God can't be more than my conditioning or my contemplation, because I have drawn the boundaries that God has to be fit in this. Then only God can be there. How it is possible? The God which is infinite, everywhere. What we heard or we have understood, and how that God can be in one of the contemplation or imagination that this God is like this. But now definitely we are looking for the God. So we have to experience the God. Guru Nanak Dev Ji has said that, Ek Onkar Satnam, this Onkar, this divine sound is the God. Satnam, true, truth, eternal. And in the 11th discourse,
Osho is explaining, whosoever is listening the divine sound will enter the door of the godliness or the God. That means this is one definition we got from our saints. What our master is explaining, because end of the day we have to listen our master, trust our master, what he is saying. And from the childhood, I have heard that in me there is a soul, and that soul is the part of divine, the part of the God. That means there is no difference between my soul and the God. So let me just check what is the existence of my soul, and then that can be the definition of God. Because end of the day, we have to come to this conclusion, because Osho has dropped this word God, because so many people in the name of religion has just spoiled this beautiful name God. So Osho is using the word existence, the godliness, the divinity, so that there is no difference of opinion. Because when you say the divinity, you can't say that this is Hindu, this divinity, or this divinity is Muslim, or this divinity is Christian or some other religion. No, it is beyond that. So no confusion. So let's come to this definition, that actually the divinity and the godliness is beyond all the differences. And that is, Osho has given one more beautiful word, that is existence. Existence means what that exists. The existence is just existing. And where we have heard that existence is all around me, in me, there is no place where the existence is not there. So one definition is like my soul. The other definition is it exists and it's all over. And Guru Nanak Dev Ji has given the definition, the ओंकार. 3 परिभाषाएं किसी ने मुझे परमात्मा की बताई थी. कहते थे अगर 3 जगह 3 परिभाषाओं में वो फिट हो तो उसे परमात्मा मान लेना. पहला, वो सब जगह है. दूसरा, वो हर समय है, जगह और समय तो कवर होगी. और तीसरा, जब हम चाहें तब है. ऐसा नहीं कि परमात्मा कहेगा कि अभी मैं छुट्टी पे हूँ, अभी मेरे सोने का टाइम है, अभी मैं तुम्हें नहीं मिल सकता. तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप पूरी तरह से टेस्ट कर सकते हैं. हर जगह, हर समय और जब आप चाहो तब. There are 3 definitions somebody told me. The 3 definition of the godliness. One is everywhere, because existence is everywhere. The godliness is everywhere. And all the time, every time, everywhere, all the time. And the third definition is when you want to just be with the existence or be with the divine, you can be. It's not that the godliness is on leave today. No leave. I can go, you can go on leave. And what's our leave from the divinity? Our mind. When we are at the mind, you can't experience the existence. Because through mind, you can't experience the existence. You have to experience the divinity with the level of beyond body, beyond mind, beyond emotions, your nothingness. And that is your consciousness. And what's your form of the consciousness? No form. Because I am in the body, the consciousness in the body. Tomorrow when I leave my body, the consciousness still be there and without any form. Or you can say that my spirit body, and after that, one day that body will also go and there is no form. So existence also has no form. All over you can find it. और इन 3 चीज़ों पर कसने के बाद जो परमात्मा है वो सब जगह है, जब मैं चाहूँ तब है.
हर समय है, लेकिन जब मैं मन के तल पर होता हूं तब मैं इसे नहीं सुन सकता। बहुत मित्र मेरे पास आते हैं, कभी ओंकार सुनाई देता है, कभी नहीं देता, क्या करे, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो कहीं नहीं जाता, हम चले जाते हैं, हम उसके पास से दूर हो जाते हैं। अगर हम मन के तल पर ना हो, शून्यता में हो, तो हर समय है। Many people comes to me and say that this existence you are talking about every time, but sometime we can listen the sound, sometime we can't listen the sound. I don't know where it sound goes. Sound is not going anywhere. I am going. I am living the sound. I am going into the mind. And once I am in the mind, I can't experience the godliness. This is the reason. Last night one of my friend was saying, sometimes I have a trust on the existence, but sometimes I don't know where it goes. Very simple. When you are in the consciousness, you can experiencing the divinity, you can have simply the trust. But when you are in the mind, you are in the stories, you are in the imagination, then your mind is dominating you, then you lose the trust with the existence. So first of all, understand this principle that you can trust the existence, you can be with the existence, you can be the divinity with the divinity, but the condition is you don't have to be in the influence of mind, which is creating all the ego, which is creating all the comparison. This is right, this is wrong, this is good, this is bad. All the definitions are coming through the mind. Because in nothingness, there is nothing. Nothingness is the nothing, the emptiness. Once you are in the emptiness, where the comparison will be? Once you are just in a space where the boundaries are. Once you are with the consciousness in your soul, where the comparison is? No comparison. So with this divinity, with this divine, when you are with the consciousness, with your space, and then it is. And how sound is the consciousness? Because the quality of the consciousness, the dimensions of the consciousness. I have a body, but in this body I have hands, I have eyes, I have legs. The quality of legs is, it is helping in walking. The quality of the hand is, it helps in picking something. The qualities of eyes is, I can see. And that's the form of the consciousness, that it is reflecting in the form of sound, in the form of light, in the form of bliss, in the form of energy, in the form of love. Like I have hands, legs, eyes, face, body. This is the same way. The whole is the consciousness, the whole is the divine. That's why we say that this consciousness is resonating with the sound. This consciousness is illuminated with the light. This consciousness is full of energy. This consciousness is full of love. Understand it. And this is the reality. और ये आत्मा जो मेरे शरीर में है, जो इस रूप को लिए है, हाथों से मैं किसी चीज़ को पकड़ सकता हूँ, टांगों से मैं चल सकता हूँ, आँखों से मैं देख सकता हूँ तो मैं एक ही। अलग अलग जगह से, अलग अलग तरह से मेरी ये आत्मा, मेरी ये एनर्जी मेरे शरीर के द्वारा काम कर रही है। जब ये आत्मा नहीं रहेगी तब किसी चीज़ को पकड़ के दिखाओ, तब किसी को चल के दिखाओ, तब किसी को देख कर दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। इसलिए शक्ति जो काम कर रही है इस शरीर में, उस शक्ति का नाम है आत्मा। और वो जो शक्ति हमारे को चारों तरफ से समेटे हुए है, जिस शक्ति ने हमें धारण किया हुआ है, जैसे माँ बच्चे को धारण करती है, उसी तरह से मैं, परमात्मा ने मुझे, हम सबको धारण किया हुआ है। हम उसके गर्भ में हैं। बस गर्भ इतना विराट है कि बीच में हमारा होना भी है और उस अस्तित्व का तुम्हारे और मेरे बीच में होना भी है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या सबूत है कि
तुम्हारे और मेरे बीच में उस परमात्मा है। एक छोटा सा सबूत है, यहां बैठे हुए मोबाइल से फोन करते हो दुनिया के किसी कोने में भी और आवाज पहुंचती है। किस चीज से? कुछ तो है इस आकाश की जिसमें फ्रीक्वेंसीज वेव मूव करती है। यहां से मैं अपने नंबर की फ्रीक्वेंसी बनाता हूं, दूसरी तरफ से मोबाइल की वो फ्रीक्वेंसी कैच करती है और हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहां से जा रही है आवाज? कौन सी तारे हैं मेरे और जिसको मैं कॉल कर रहा हूं उसके बीच? क्या सबूत है? मेरे छोटे से इंस्ट्रूमेंट, जब तक तारे थी तब तक तो अलग बात थी, अब तो मोबाइल फोन है। मेरे छोटे से इंस्ट्रूमेंट में ऐसा क्या लगा हुआ है जो दूसरी तरफ भी दुनिया के दूसरे कोने में इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है, जो मैं बात कर सकता हूं एक सेकंड में, कनेक्शन बैठता है। ऐसे ही ये आकाश एक तरफ मुझे छू रहा है और एक तरफ आपको छू रहा है। लगता है कि बीच में खाली है, लेकिन ये भराव है। इस भराव को महसूस करना होगा, जो तरंगित भी हो रहा है संगीत से, जो प्रकाशित हो रहा है प्रकाश से, ज्योति से, जिसमें ऊर्जा है, जो आपको और मुझे एक जगह बैठते हुए एक दूसरे को हम महसूस कर सकते हैं प्रेम से। जरूरी नहीं कि मैं आपको छूऊं, आप मुझे छूएं। दो मित्र साथ में बैठकर भी एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। किससे? एक दूसरे की प्रतीति होती है। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, इन छोटे छोटे अनुभवों को हम ध्यान नहीं देते और परमात्मा होते हुए भी खो जाता है। वी आर कनेक्टेड विद द स्पेस. द स्पेस इज कंटेनिंग ऑल ऑफ अस. द स्पेस इज इन वन वे टचिंग मी, द अदर वे टचिंग यू. There is a connection. Maybe I am thousands and thousands miles away. Still the connection is there because one part of the space is touching me, the other part of space is touching you. Same as the mobile phones. We are just dialing the number and certain frequencies, you just catch my sound. And this is how we are connected with the space. It exists. But the trust has to be there. And the trust in the form of consciousness, in the form of existence, which is just resonating, illuminated, full of love, full of energy. Feel it and make a connection. If we experience the sound also, if experience the consciousness, we experience the existence, but the problem is we don't make our connection. The indifferent attitude is always there. और हमारी मुसीबत ये है कि हम अनुभव भी करते हैं अपनी आत्मा को, चारों तरफ के परमात्मा को, लेकिन हम उसके संबंध को नहीं बनाते कि मेरा तुझसे नाता है। वो संबंध जो हर समय बना हुआ है उसे महसूस ही नहीं करते, तटस्थ हो जाते हैं उस अस्तित्व के लिए भी। और जब तक तटस्थ होंगे तब तक भरोसा कहां से होगा? भरोसे के लिए, विश्वास के लिए वो कनेक्शन चाहिए जो निरंतर मेरा और उससे बना हुआ है। तोड़ता हूं तो मैं, दूसरी तरफ से नहीं, क्योंकि मैं मन के तल पर जाकर खो जाता हूं। भूल जाता हूं तो मैं, वो नहीं, क्योंकि मैं संसार में खो जाता हूं। जब तक ये स्मरण है तब तक कनेक्शन है। इसलिए कहते हैं याद बनी रहे। याद है तो आबाद है, और याद नहीं तो खो गए। तो किस तरह से निरंतर उस परमात्मा को जिसने मुझे धारण किया हुआ है, मेरा स्मरण भी बना रहे और मेरा नाता भी बना रहे, और उसके बाद आप चाहो भी तो उससे दूर नहीं हो सकते। And once you have connection with the existence, with the godliness, you are continuously just feeling it, then the existence will not leave you. And then the trust will automatically be there.